the Laplace of 1 over c I dt. So this is our pretty much equation. It is right here. So v of s is 12. So 12 can be written as 12 by s because 12 is constant and its Laplace is 12 by s. After that, we will find the initial condition for this part and this part. So what are those things? For initial condition, we use di by dt as s and I of s minus I of 0. So now calculating the I of 0, in this case we are having this thing closed before time. This thing is closed and this is open. So we are having this circuit for t less than 0. So इसमें हम करंट अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास शॉर्ट होगा, ये वाला ओपन होगा. So करंट किस तरह होगा? I is equal to 12 divided by 1 plus 2, which is 12 divided by 3 is 4 ampere. Why we neglected the 1 Henry? 1 Henry is neglected because it is a DC circuit and it is already an energized component. So energized component will let all the current to flow in it, and capacitor is energized, it has a voltage across it. So due to this voltage, it will not allow any current. So the current is only dropping by the 2 and 1 ohm. So that's why 12 divided by 2 plus 1 is 4 ampere. After that, let's calculate the initial value for this part. So for that, we can see that here we are having a charged component before the time t has occurred. So if it is a charged component, so the voltage on let me clean it a bit. So the voltage on this point and this point is actually our residue voltage. So we will calculate that voltage. So that thing is calculated as 1 over c and I of t dt from 0 to infinity. So we can say that this thing is the voltage of the this capacitor. तो अगर हम ये वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इसमें पहले से क्या है, एक वोल्टेज पहले से इसमें स्टोर है. हम इस चीज को नाम दे देते हैं कि ये Vc ऑफ t है. सो अगर इसमें कोई चीज पहले से स्टोर है, that stored voltage would appear as Vc of s divided by s. So this is how we convert this integral to this Laplace Laplace transform format, and after that we will add the residue of this same voltage. So इसमें कोई voltage यहाँ पे appear होगा, यहाँ पे 0.1 farad जो लिखा है, this is the capacitance. So इस वजह से हमारे पास जो यहाँ का जो current है, so this thing is 1 over 0.1 and this thing has become I of s. So that's why this thing is I of s. और इसमें जो पहले से जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्टेज है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे V of s. तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने वोल्टेज फाइंड करना है कि यहाँ पे कितनी हमारे पास वोल्टेज है. सो फॉर दैट वी यूज दिस वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कि हमारे पास टोटल वोल्टेज है 12 और कहाँ से गुजर है, 2 ओहम से गुजर है, 1 ओहम से गुजर है. तो 2 ओहम के बाद
और 1 ओम के बाद इसमें टोटल कितना ड्रॉप्स आएगा, 3 + 3 इसमें आ जाएगा और 4 + 4 इसमें आ जाएगा और 4 इसमें आ जाएगा। सो 12 - 4 - 4 इज 4। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट। अगर आपने खुद सॉल्व करना है कि इसमें क्या वोल्टेज है, तो पुट दिस थिंग एज शॉर्ट, दिस थिंग एज ओपन, और फिर यहाँ इस पॉइंट के साथ एक लूप लगाए, एक नोड लगाए और इसको नाम दे दे V1। तो योर इक्वेशन वुड बी V1 -12 divided by 2 plus V1 - 0 divided by 1 is equal to 0. तो we have come from this to here and from this to here. इससे अगर आप V1 निकाले तो that would be 4 as well. So वहाँ पे 4 put करते हैं. So putting all the values in that equation, we came up with this equation, and after that we calculated K1, K2. ये आप जरा खुद कैलकुलेट करें और फिर इस इक्वेशन पे आप पहुंच जाएंगे। सो लेट मी नो, ये आप खुद जरा सॉल्व करें और फिर चेक करें कि हाउ वर द रिजल्ट्स ऑफ योर पर्टिकुलर एंड कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस। And that's it for Laplace transform and inverse Laplace transform. Thank you.